चैप्टर 16 असेसमेंट एंड ऑडिट जीएसटी का मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड माय एम इज़ टू कंप्लीट लाइक चैप्टर 16 के क्वेश्चंस जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 तक, वो प्लस चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद डिमांड एंड रिकवरी भी अगर 1 आवर में टाइम मिला तो आई ट्राई टू कंप्लीट, बट इसका टारगेट मेरा ये है कि 30 मिनट्स में आई हैव टू कंप्लीट दिस 12 क्वेश्चन एंड उसके बाद सर्च एंड सीजर वाला कंप्लीट करना है। तो बेसिकली ये अतुल अग्रवाल का क्वेश्चन बैंक है मई 2025 का, मैं उसी को यूज़ करके कर रही हूँ क्वेश्चंस एंड आई गेस ये हो जाना चाहिए 30 मिनट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एंड टुडे इज़ 1 सितंबर 2025। क्वेश्चन 1, सो इट्स लाइक ना स्टार्टिंग में थोड़े छोटे क्वेश्चंस हैं एंड फिर उसके बाद हर टॉपिक कैसे है, थोड़े छोटे क्वेश्चंस हैं फिर बड़े क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं क्विकली रीड ही कर लेती हूँ। Whether principle of natural justice is must to be followed before passing assessment order against the unregistered person? Yes, principle of natural justice follow होना चाहिए before passing assessment order against unregistered person. Yes, principle of natural justice must be followed before passing assessment order to impose assessment order against a person seeking to impose any financial burden on him. Meaning financial burden हो गया for passing assessment order. क्वेश्चन नंबर 2, प्रोविजनल असेसमेंट। हाँ, प्रोविजनल असेसमेंट होता है इफ प्रॉपर असेसमेंट में नहीं गए, असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो एंड प्रॉपर वैल्यू और रेट्स कैलकुलेट नहीं हो पा रहे हैं। वैल्यू इनटू रेट आपका टैक्स का अमाउंट आता है। अगर उन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रोविजनल असेसमेंट में जाते हो, जिसका रेट होता है 18% एंड 90 डेज में हमारा प्रोविजनल असेसमेंट का रिजल्ट आना होता है। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या है। हाँ नहीं, 18% तो इंटरेस्ट का रेट होता है। अगर हम कम प्रोविजन करते हैं, ज़्यादा टैक्स बन जाता है हमारा, तो हमें 18% पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना होता है फॉर एनी एडिशनल डे बियॉन्ड 90 डेज शायद से। और अगर हमें रिफंड मिलना होता है तो वो आई थिंक 6% का रेट होता है, जो कि आफ्टर 30 डेज इम्प्लाई होता है। लाइक जब आप प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनल ऑर्डर आ गया उसके 30 डेज के बाद आपने मतलब अगर फिर भी रिफंड नहीं आता है तो, और वो भी आई थिंक एप्लीकेशन के बाद। तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। ABC Limited is a supplier of medical equipment to various hospitals. While supplying the equipment, ABC Limited is not sure about the rate of IGST applicable, 18% or 28%. You are required to advise ABC Limited in this situation. ABC Limited does not want to seek advance ruling. नहीं जाना है उसको। ओके, तो हम उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अभी आप लोअर रेट पर या तो उसको प्रोविजनल असेसमेंट कर दो एंड फिर बाद में डिफरेंशियल रेट आप पे कर देना अगर रेट 28% निकलता है तो। ये हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इन सच एन इवेंट ABC लिमिटेड कैन मूव एन एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट फॉर सीकिंग परमिशन टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी प्रोविजनली एट द रेट 18% अपॉन सबमिशन ऑफ बॉन्ड और सिक्योरिटी। बॉन्ड एंड सिक्योरिटी देना है एंड सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट। अपॉन फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट ABC लिमिटेड would be liable to pay differential liability with applicable interest if it is found that rate was 28%, whereas ABC Limited paid tax at the rate 18% pursuant to order passed initially on its application for seeking provisional assessment. Like provisional assessment के टाइम पर 18% हमने पे कर दिया है और अब हमें फाइनलाइजेशन के टाइम पर डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं। ओके, सो इसके अंदर हम लिख सकते हैं
एबीसी, बिकॉज एबीसी को एडवांस रूलिंग में नहीं जाना है टैक्स रेट के क्लैरिटी के लिए, तो एबीसी लिमिटेड कैन मूव एप्लीकेशन फॉर provisional assessment for seeking permission to discharge tax liability provisionally at the rate 18%. अब बिकॉज हम लोग कम अमाउंट पे टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें एक बॉन्ड और सिक्योरिटी भी सबमिट करनी होगी. अपॉन submission of bond and security and subject to finalization of assessment. Can move application for provisional assessment and security provisionally at the rate इतना upon finalization किसका फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट, किसको भरना है. एबीसी लिमिटेड वुड बी liable to pay or would pay to pay differential tax liability with applicable interest if rate was 28%, whereas ABC has paid tax at the rate 18% pursuant to order initially passed for provisional assessment. Question number 3. Kulbhushan and Sons has entered into a contract to supply a consignment of certain taxable goods. However, since it is unable to determine the value of goods supplied by it, it applies for payment of tax of which goods on a provisional basis, along with required documents in support of its request. It applies for payment of tax on a provisional basis. Okay. On 12 January, AC or Central Tax issues an order allowing payment of tax on provisional basis, indicating value of which assessment is allowed on provisional basis and amount for which bond is to be executed and security is to be furnished. Bond and security we have to give. Kulbhushan and Sons complies with the same and supplies 25 January को, thereafter paying tax on provisional basis in respect of said consignment on 19 Feb. Consequent to final assessment on 21st March, tax of 1,80,000 becomes due on the consignment. Kulbhushan and Son pays the tax due on 9th April. Determine the interest payable if any by Kulbhushan and Sons in above case. Starting में उन्होंने जो अमाउंट पे किया वो यहाँ पे गिवन क्यों नहीं है? Paying tax on provisional basis. Consequent to final order passed, a tax of becomes due. ओके, आई थिंक उन्होंने लोअर पे ही पे किया है, मतलब 1,80,000 डिफरेंशियल लाइबिलिटी है जो अब पे करनी पड़ेगी. अब उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. कुलभूषण एंड सन पेज ऑन 9th अप्रैल. तो आई गेस 1,80,000 का जो अमाउंट है उसमें क्योंकि प्रोविजनल बेसिस पर 19th फेब को पे किया है ना, तो 19th फेब से 90 डेज में भी लगेगा क्या? आई एम नॉट श्योर, एक बार देखना पड़ेगा. Assuming all facts remaining same, if consequent to final assessment, a tax of becomes refundable. Refundable का केस का, अच्छा ओके, दिस इज द कंटेंट. ओके यहाँ पे refundable भी है. If passed on 21st March को ही refundable applied by Kulbhushan and Sons on 9th April and tax was refunded on. ओके यहाँ पर रिफंड के लिए हमें एप्लीकेशन देना होगा.
and tax was refunded by it on 5th June. Interest receivable. ओके, दो केसेस है, एक हमारे पास इंटरेस्ट का है, एक हमारे पास रिफंड का है. डिमांड एंड रिफंड. टैक्स लायबिलिटी एज पर फाइनल असेसमेंट. इन केस, अच्छा ठीक है, पहले रीड कर लेती हूँ. रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट. Tax liability as a financial assessment is higher than provisional assessment. That is, tax becomes due. The registered person is liable to pay interest on tax payable added 18% from first day after the due date of payment of tax. First day after the due date of payment of tax. तो इस केस में goods on 25th January. तो January February 20 Feb, आई थिंक 20 Feb तक हो जाना चाहिए था. 20 Feb तक है, 21 Feb से हम लेंगे. तो 21 Feb से 18% टिल 9th of April. 21 Feb से लेकर 9 April तक का हमारे पास इंटरेस्ट आएगा. सो और इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर प्रोविजनल असेसमेंट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट. इन केस, in given case, due date for payment of tax on 25 January is 20th Feb, क्योंकि हमारा इस दिन सप्लाई हो गया 25 जनवरी को, तो उसका ड्यू डेट हो गया 20th Feb तक, नेक्स्ट मंथ की. तो यहाँ पर लायबिलिटी टू पे फॉलोइंग इंटरेस्ट 1,80,000, 18%, 21st Feb से 9th April. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 8 डेज ये. अप्रैल फेब हो गया, मार्च अप्रैल के 9 डेज, तो मेरा 48 ही आ रहा है. हाँ ठीक है, 48 डेज हो गया. तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा भी इतना ही आएगा. और रिफंड के लिए देख लेते हैं. रिफंड बिकम्स अमाउंट बिकम्स रिफंडेबल, टैक्स बिकम्स रिफंडेबल. Registered person shall be paid interest at the rate specified, that is 6%, immediately after the expiry of 60 days from date of receipt of application till the date of refund. मतलब 61st day से. अब इन्होंने एप्लीकेशन दिया था by कुलभूषण which is applied on 9th April को. 9th April से 60 जून, 60 डेज अपना कितना हुआ, तो 30 - 9, यहाँ पर 21 डेज अप्रैल के, अप्रैल मई जून. ओके, 60 डेज हुए ही नहीं है, तो इनको रिफंड देने की ज़रूरत ही नहीं है. रिफंड देने की तो ज़रूरत है, बट इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में लिखते हैं इन केस द प्रोविजनल टैक्स पेड इज less than the actual amount of tax to be paid on final assessment. Tax differential amount of tax is differential amount of tax is to be paid by registered person along with the interest of 18% per annum from the first day after due date of payment of tax till the actual payment. Whether such amount is paid before or after issuance of financial, paid before or after the issuance of ओके, मतलब वो प्रोविजनल अमाउंट आप चाहे कभी भी पे करो इंटरेस्ट का, बिफोर और आफ्टर फाइनल असेसमेंट से. ठीक है, आई गेस मुझे थोड़ा सा गैप देना चाहिए यहाँ पर, बट ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा. In given case, due date
for payment of tax of goods cleared on 25th January is 20th Feb. Does interest liability equals to rupees 1,80,000 into 18% into my 48 divided by 365. यहाँ पे लिख देते हैं इस 25 of tax is cleared on इतना interest is to be charged from 21st Feb till 9th of April. अभी अमाउंट आ जाएगा 4261. अभी तो यहीं से देख लेती हूँ, बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा शायद. और फिर if in final assessment on 21st March a tax of rupees 4,20,000 becomes refundable, interest refund along with interest added 6% per annum applicable from the next day after 60 days from application of refund by registered person is to be paid by department. In given case, application is made on 9 April and refund is received on 5 June. Since 60 days are still to be completed, are still remaining. These are still not completed. Are still not completed on 5th June, starting from 9th April. No interest on refund is to be paid or is to be received. Final assessment wasn't refundable 6% next day after 60 days from application of refund. 60 days not completed, no interest on refund received or receivable. Very quickly. In case folder period refundable, tax becomes refundable, restoration shall be paid interest at the rate at the specified rate immediately from the date immediately after the expiry of applicable from the next day after expiry of 60 days from date from application of refund made from receipt of application. From receipt of application of refund.
till actual refund date. Refund has been made on 5th June within 60 days. Since 60 days are still remaining, are still not completed on 5th June from the date of receipt of application of refund. Starting from 9th April, no interest is receivable or interest is not payable. No interest is to be received on tax refunded. Question 4. Divya trader obtained permission for provisional assessment and supplied 3 consignments of furniture on 20th April. तो इसका ड्यू डेट हो गया अप्रैल से मई 20th में. Provisional basis all the 3 consignments on 20th May. Final assessment order passed on 21st June and tax of 1,20,000 and 1,50,000 become refundable on first and third consignment. सेकेंड कंसाइनमेंट में लेकिन पर इंटरेस्ट बन रहा है. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड में रिफंड बन रहा है. तो इसके लिए अपना ड्यू डेट जो होती है उससे नहीं अच्छा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर से हमने जब एप्लीकेशन पास किया, जब हमने अप्लाई किया, अप्लाइज फॉर रिफंड ऑन फर्स्ट एंड ऑन 12 जुलाई. ओके, 12 जुलाई से अभी 60 डेज यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर 31 डे 19 दिन जुलाई के, अगस्त एंड सितंबर के 10 डेज, मतलब कि 10 सितंबर तक हो जाना चाहिए था यहाँ पर. ठीक है, अगर अपन देखें तो 10 सितंबर तक रिफंड आ जाना चाहिए. एंड फर्स्ट एंड थर्ड पे हुआ है ना, सेकेंड कंसाइनमेंट पे टैक्स ड्यू ऑन द सेम डे, मतलब 12 जुलाई को दे दिया है. एंड ये 21 मई से लेकर के जुलाई तक का इंटरेस्ट लग जाएगा. मई 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 11 days of May, जून, जुलाई, 53 डेज के लिए हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा एट 18%. ठीक है. टैक्स वॉज एक्चुअली रिफंडेड ऑन 8th September. हाँ, 10 सितंबर ना विद इन आ गया. ठीक है, थर्ड का 18th को आया, मतलब थर्ड कंसाइनमेंट के लिए इंटरेस्ट जाएगा 10 सितंबर से 18 सितंबर तक. तो आई गेस 10th को भी इंक्लूड करना होगा. बाकी लेट्स सी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगर करते हैं तो 9 डेज, नहीं तो 8 डेज. Who purchase consignment have not taken interest payable and receivable. तो अगर बिगनिंग में भी लिखना हो तो लिख सकते हैं order passed in case of tax payable on final assessment, the registered person is required to pay interest at the rate 18% per annum on the differential amount from the first day after the tax become due to be paid till the actual date of payment. The tax become due to be paid when assessed provisionally on the differential amount from the first day after the tax become due to be paid when provisionally assessed till the actual date of payment. In given case,
tax of rupees 1,20,000 is due on second consignment and paid on 12th July. Yes, refund of itna and pays the second consignment or same day on 12th of July. The due date to pay tax when provisionally assessed is 20th May. Hence, interest payable for period 21st May till 12th July is 1,20,000 added 18%. किंतु में अपने डेज निकले थे 53 days divided by 365 is equals to 1,20,000 into 18% multiply 53 divided by 365 is equals 3136.44 the interest आएगा. Also in case of consignment first and third, refund of rupees 1,20,000 and 1,50,000 is to be received. Interest on refund is to be paid at the rate 6% per annum if the amount is refunded after expiry of 60 days from the date of application of refund from registered person. Since first consignment refund was received within 60 days, that is on 8th September, no interest is receivable. In case of second consignment, refund was received after 60 days from 12th July application, that is after 10th September, thus interest is receivable for period 10th September to 18th September. Refund interest was to 1,50,000 into में 6%, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 65 which is equals to into 3% into my 9 divided by 365, 2219.
नहीं 221.9 1,50,000 into 6% into 9,365 221.91 ठीक है आंसर चेक कर लेते हैं सो यहाँ पर ये 8 days आ रहा है मीन्स 10th September पीरियड 11th September से स्टार्ट करेंगे 11th September 60 days यहाँ कंप्लीट हुए उसके नेक्स्ट डे से 11th September से 18th September तो ये 8 हो जाएगा 1,50,000 into 6% into 8 divided by 365 is 197.26 okay is equals to 11th versus star not 10th it's at 12 is equals 19 days July August September 10th of September तक 60 days कंप्लीट हो रहे हैं तो हमें 61st डे से लेना है ठीक है देन ये तो 53 days के लिए है 3136 okay tax becomes due consequent to final assessment order interest is payable first day from the first day after the due date of payment of tax stay after the tax becomes due 18% of the due date of payment of tax become due to be paid when provisionally assessed under provisional assessment till the actual date of payment given case whether such amount is paid before or after the issuance of order for final assessment इसका I don't know क्या यूज है okay due date for payment of tax of goods for tax goods cleared on due date to pay tax when provisionally assessed 20th May second consignment hence interest payable for period till 12th July second consignment interest ठीक है वाला 53 days 336 also further provides that the tax becomes refundable consequent to order of final assessment interest is payable added 6% immediately after expiry of 60 days from date of receipt of application till refund of such amount paid 6% if after expiry of 60 days from date of application of refund from registered person till date of refund of such tax paid on 8th of September within 60 days from interest is receivable. Trust is receivable in case of third after 60 days from 10th July that is after 10th September. Then interest is receivable for number 497. Question number 5 स्क्रूटिनी असेसमेंट स्क्रूटिनी प्रोविजनल असेसमेंट हो गया उसके बाद अगर स्क्रूटिनी के लिए हमारा केस अगर पिक होता है तो स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए रिलेटेड क्या सीन रहेगा ये यहाँ पर अपने पास है 19 days plus 31 days plus 10 days is equals to 60 days. . 60
text. Explain recourse that may be taken by the officer in case proper explanation is not furnished or discrepancy detected in return file while conducting scrutiny of returns under section 61. ओके, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला यहाँ पर, तो क्या रिक्वेस्ट कर सकता है, मतलब क्या एक्शंस ले सकता है ऑफिसर. तो if proper application not furnished or discrepancy detected in return file while conducting scrutiny under section 61, proper officer may conduct audit कर सकता है, direct the registered person to get his records examined and audited by CA, मतलब special audit वाला case section 66, exercise powers of inspection, search and seizure and proceed to determine tax and other dues under section 73, 74, 748, scrutiny assessment. नहीं, demand order related, so cause notice and demand order. So यहाँ पर if proper explanation is not furnished for discrepancy detected in return filed while conducting, दोनों क्वेश्चन को रिपीट किया थोड़ा सा, scrutiny, while conducting scrutiny of returns under section 61 of the GST Act of registered person, proper officer may conduct audit of registered person. Audit के बाद अपना था inspection, special audit, direct registered person to get his records including books of accounts audited and examined by a CA or cost accountant nominated by commissioner. Ordered direct registered person get his records including audited, examined by CA. But third, exercise powers of inspection, search and seizure with respect to registered person. Number 4, proceed, मतलब कि ऑडिट कंडक्ट करे, ऑडिट और फिर ऑडिट कंडक्ट करेंगे तो बुक्स वगैरह चाहिए कि, तो बुक्स देने के लिए, और एग्जामिन बाय सीए, और सीए नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर, बाय सीए nominated by CA or cost accountant nominated by commissioner. Exercise powers of inspection, search and seizure with respect to registered person. Proceed to determine tax and other dues under section 73, 74 or proceed to determine tax and other dues under section 73, 74 or 75. Then seizure. Okay, question number 6. Explain the provision relating to assessment of unregistered person by the proper officer under section 63. Unregistered person will be liable to get its account assessed and
or fails to obtain registration. Okay. Where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so. Fails to obtain registration even though liable to do so. B part. Whose registration has been cancelled but who is liable to pay tax. Proposal may proceed to assess the liable to pay tax. Registration has been cancelled but who is liable to pay tax. The proper officer may proceed to tax liability to best of his judgment for relevant tax filed for cancellation. Whose registration has been cancelled but who is liable to pay tax to excess tax liability to the best of his knowledge for relevant tax periods. Number 1, the registered person has contravened such provisions CGST Act has contravened which CGST Act contravened which provisions of CGST Act specified reasons for cancellation. Second, person paying, यहाँ पे reasons है for cancellation of registration. Okay. ओके अब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेगा क्योंकि उसका कैंसिल हो गया. ओके पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम under section 10 of ST Act. Decision has not furnished his return for a year. Furnishes his return financial. Furnishes his return year. Tax has not furnished return financial on 3 months.
from due date of furnishing registered person is required to furnish quarterly returns required to furnish quarterly returns has not furnished returns for a continuous period of 6. Registered person is required to furnish quarterly returns, paying tax under composition scheme, not furnish a return beyond 3 months. Furnish quarterly returns required to furnish quarterly returns has not furnished returns for a continuous period of 6 months. Continuous period of 6 months. Any registered person required to furnish return on quarterly basis. Required to furnish return quarterly basis has not furnished returns for a continuous period of 2 tax periods. Number 5. Any person with voluntary registration has not commenced business within 6 months from date of any person with voluntary registration has not commenced business within 6 months. Voluntary registration not commenced 6 months from date of registration. Voluntary registration. Station house. Registration has been
obtained by means of fraud, willful misstatement, or suspension. Oh, for suppression of facts. आ रही है. Issued by proper officer. Assessment order shall be issued within 5 years from date of shall be issued within 6 years. Date of assessment order shall be issued within 5 years from the date of furnishing अब समरी असेसमेंट उसका करते हैं जिसका हमें शक होता है कि वो देश छोड़ के चला जाएगा या फिर हम उसे टैक्स रिकवर नहीं कर पाएंगे, एंड दैट वुड बी अ रेवेन्यू का लॉस होगा. If summary assessment order to be necessarily passed against the registered person, जिसके पास भी कस्टडी हो गया वो PIC in case of goods or in case of goods under under the transportation or in case of goods under the transportation or stored in warehouse and its registered person and it's registered in case of goods under the transportation or stored in warehouse. In case of goods, यार नींद की वजह से सब गड़बड़ हो गया. Assessment order shall be issued by proper officer within a period of 5 years from date of furnishing the annual return. For assessment order shall be issued by within period of 5 years from date of furnishing a financial annual return for the financial year to which non-payment of tax relates. No such assessment without giving person an opportunity of being heard. Natural injustice. Principle of natural justice. In case of goods under the transportation or storage warehouse and registered person is not ascertained, PIC of
such goods shall under the transportation or warehouse, such goods shall be deemed to be registered person. On the registered person in respect of such goods cannot be sent a person in charge of the shall be deemed to be the registered person. Question number 8. Summary assessment. Okay. Brief note on summary assessment in certain special cases. In special cases of section 64. Question number 8. Summary assessment in certain special cases as per 64. तो summary assessment कब होता है? जब person बाहर जा रहा होता है या फिर हमें होता है कि वो और टैक्स पे नहीं करेगा, तब in order to protect the interest of revenue. Okay. तो as per section 61 था नॉर्मल ऑडिट, 66 स्पेशल ऑडिट एंड यहाँ पर 64 है समरी असेसमेंट का. एंड स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए भी कुछ था क्या? स्क्रूटिनी असेसमेंट. ओके, स्क्रूटिनी असेसमेंट सेक्शन 61 में. ठीक है, अब यहाँ पर एज पर सेक्शन 64 ऑफ CGST एक्ट, summary assessments are done in order to protect the interest of revenue. Protect the interest of revenue with previous permission of additional or joint commissioner when proper officer has evidence that a taxable person has incurred liability to pay tax under Act, and any delay in passing assessment order may adversely affect interest of revenue. Also, additional proper officer यहाँ पे पास कर सकते हैं. proper officer has evidence with previous permission. ठीक है. Additional or joint commissioner may withdraw summary assessment order on an withdraw कर सकते हैं summary assessment on an application filed by taxable person within 30 days from date of receipt of order. May withdraw summary assessment order application filed by taxpayer within 30 days from date of receipt of order. Okay, summary assessment order जब उसने रिसीव किया taxable person ने, उसके within 30 days from date of receipt of order, summary assessment order, or on his own motion, summary assessment order. और इसके अंदर
if he finds order such order erroneous and may instead follow procedure given under section 73, 74 और शो कॉज नोटिस का है ये 74A to determine tax liability of taxable person of such taxable person बात कर रहे हैं वो. अब यहाँ पर where taxable person where such taxable person is not ascertainable, the person in charge of such goods shall be deemed to be taxable person liable to be assessed and pay tax and any other amount due. Okay. Such taxable person not ascertainable person in charge deemed to be taxable person. Instead follows 73, 74, 74A. Such order erroneous. Okay. Question number 9. Assessment order passed by proper officer may be withdrawn under CGST Act. Okay. Assessment order by proper officer may be withdrawn if number 1, assessment order passed by proper officer may be withdrawn. Assessment of non-filers. Assessment order. Okay. In following cases. Assessment order in following cases में आ सकता है. First, assessment of non-filers of return, मतलब कि वो लोग registered हैं but non-filers of return हैं. The best judgment order passed by proper officer shall automatically be withdrawn where registered person files a valid return within 60 days of service of best judgment order, best judgment assessment order. However, interest liability or late fees payment will continue. मतलब कि बेस्ट जजमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा इफ रिटर्न फाइल कर दी वैलिड रिटर्न विद इन 60 days फ्रॉम पासिंग ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर. हाउएवर इंटरेस्ट लायबिलिटी एंड लेट फीस पेमेंट कंटिन्यू होगा. ठीक है. एंड देन सेकेंड केस है अपना, ये तो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न है, उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी तो विड्रॉ हो जाएगा. और समरी असेसमेंट, आई गेस इसमें भी जब रिटर्न फाइल कर देंगे तो अ टैक्सेबल पर्सन
on whom such order passed. अच्छा अभी पढ़ा था कैन अप्लाई फॉर विड्रॉल. यहाँ पर था सेक्शन 64 में adversely may withdraw summary assessment order from 30 days of receipt of summary assessment order. Okay, यहाँ पे 30 days है, यहाँ पर 60 days है. 60 days for withdrawal to additional or joint commissioner within 30 days of receipt of such order. If also if officer finds order erroneous, then he can withdraw it and direct PO to carry out tax determination in terms of section 73, 74, 73 or 74 और 74A. 73 तो अपना होता है if वो इनोसेंट होता है, उसने कुछ ज़्यादा फ्रॉड वगैरह नहीं किया होता है. 74 फ्रॉड वाला केस. 74A सम न्यू सेक्शन है, देखना पड़ेगा. ऑफ CGST एक्ट 2017. Can follow on his own motion, finds fraud and direct proper officer on his own motion. Additional or joint commissioner can follow similar on his own motion if he finds order erroneous. I guess यहाँ वाला ऑफिसर भी तो एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ही होना चाहिए ना. As per taxable person against whom summary assessment order has been passed can apply withdrawal to the. ओके यहाँ पर है, उसको एप्लीकेशन आया तो उसने अप्लाई किया था, तो वो एप्लीकेशन के बेसिस पर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर बोल सकता है प्रॉपर ऑफिसर को कि तुम टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करो. अदरवाइज सिमिलर कोर्स ऑफ एक्शन वो खुद से भी कर सकता है इफ ही फाइंड सच ऑर्डर एरोनियस. ओके यहाँ पर ये इसका कंटिन्यूएशन है. फाइंड्स देन ओके एप्लीकेशन मिला तब person on whom such order passed can apply किया एंड देन ऑफिसर ने डायरेक्ट किया, पहले विड्रॉ किया और फिर डायरेक्ट किया प्रॉपर ऑफिसर को कि कैरी आउट करे वो टैक्स डिटर्मिनेशन. और अगर उसको डायरेक्टली खुद मिल जाता है तो वो ओन मोशन में भी सिमिलर प्रोसीजर फॉलो कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 10. डिफरेंस बिटवीन ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 65 एंड स्पेशल ऑडिट. 65 तो टैक्स अथॉरिटीज करती है, 66 वाला स्पेशल ऑडिट करता है CA और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंटेड बाय कमिश्नर एंड उसकी फीस भी कमिश्नर ही पे करता है एंड वो स्पेशल ऑडिट होता है. ठीक है, एक बार ये आई थिंक नॉर्मल ऑडिट रहता है. तो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 65 बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है यार, 12 क्वेश्चंस हैं. ओके 1 कमिश्नर or any
officer authorized by him, the commissioner or authorized by him can undertake, commissioner or any officer authorized undertake audit of any registered person for such period or frequency and in such manner prescribed. Audit shall be completed within 3 months from date of commencement of audit. However, commissioner can extend period by period up to maximum of 6 months. यहाँ पर 3 months ये पीरियड की बात हो गई, ये पीरियड की बात हो गई, पीरियड टू कंप्लीट की बात हो गई, एंड यहाँ पर कौन करता है, कौन करता है एंड क्या करता है, कौन एंड क्या करता है. कमिश्नर कैन एक्सटेंड और यहाँ पर पीरियड की बात हो गई है. ठीक है, अब यहाँ पर अब है स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 66. ठीक है, इसमें है अपने पास, हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन को करवाना होगा. ये रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी डायरेक्टेड to get his records audited or examined. Records including books of accounts audited or examined by a CA or cost accountant during any CA or cost accountant during any stage of scrutiny, inquiry, investigation, scrutiny, inquiry, investigation, or any other proceedings depending upon complexity. Officer, any officer not below rank of AC may order special audit with prior approval of commissioner if he is of opinion that value has not been correctly declared, or if, ठीक है, इतना काफ़ी है. इसमें लिखा है if he is of the opinion that value has not been correctly declared or the credit availed is not within value and credit are not correctly declared, failed are not correctly declared. और पार्ट 2 होता है, इसमें भी है कौन AC कर सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ AC
with prior approval of commissioner. यहाँ पर commissioner or any person authorized by commissioner, यहाँ पे 3 months मिलते हैं to complete the audit from commencement of audit, or can be extended 6 months, not beyond 6 months by the commissioner. और यहाँ पर special audit के लिए not below the rank of below the rank of AC prior approval of commissioner चाहिए यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ पर completion की डेट है, यहाँ पर भी पीरियड आ गया है. Within 90 days असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता है. AC कैन एक्सटेंड further by further 90 days. Okay. Question 11. Prithviraj registered under GST served notice of audit under GST law 10th of July. Records and other documents are as sought by the tax authority have been made available by Prithviraj on 25th July. Order है 10th July को 25th July को यहाँ पर स्टार्ट हुआ है. इसके पास सामान आया है. द टेक्स्ट ओके इसमें ये होता है कि जब बुक्स रिसीव हो गई हो डेट या फिर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट विच एवर इज अर्लियर, ऐसा कुछ होता है. द टैक्स अथॉरिटी विजिट्स लोकेटेड इन 8th of August को टैक्स अथॉरिटीज विजिट किया, 25 जुलाई को बुक्स दे दी और 10 जुलाई से नोटिस भेजा है. डिटरमाइन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 65 to be completed assuming is required to be completed, within which audit is to be completed assuming that no extension is given. अब यहाँ पर commencement of audit कब से होगा? The audit is to be completed within 3 months from date of commencement of audit. अब यहाँ पर date of commencement of audit क्या है ये लिखना है. Means later of following, जिसके अंदर है a date on which records etc are made available by registered person. पार्ट बी जब एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट हो जाएगा एट प्लेस ऑफ बिजनेस. एक्चुअल इंस्टीट्यूशन आई थिंक 8th को यहाँ पर पहुँच गए, विजिट कर दिया तो एक्चुअल इंस्टीट्यूशन हो गया वो. एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ टैक्स पेयर. In given case, date of commencement is later of number A, date of records, date on which records and documents made available, that is 25th July, or actual institution of audit, that is 8th August. Hence, date is 8th August. Hence, audit is to be completed within 3 months from 8th August. This number, September, October, November, I think November आना चाहिए यहाँ पर, बट इन्होंने आंसर में कुछ लिखा नहीं है तो फिर ठीक है. Is required to be completed a time limit within which 3 months from 8th August. ये हो गया बस, ठीक है. Question number 12. A notice for audit under 65 is served on 2nd December 2024 for audit of financial years 23-24. Tax authorities visited its place on 20th December. Okay, tax authorities 20th December को आई
and requested certain documents. Documents are made available on 30th December. तो later is the date. तो date of एक बार पढ़ लेते हैं फिर कुछ और निकल आता है. After in-depth checking of records, audit was completed on 25 March. And audit findings were communicated to taxpayer. However, accountant is of the view have completed the audit after the lapse of maximum time period, जो कि होता है 3 months. Tax authorities cannot conduct audit of 2 financial years at a time. ये तो ऐसा कुछ नहीं है. whom has approached you to advise you on the said issues. You are required to determine the technical veracity of the above views on the same with reference to the relevant provisions. में प्रोविजंस का अगर बोले तो डेट ऑफ हाँ ठीक है ना ऑडिट अंडर सेक्शन 65 is to be completed within 3 months from date of commencement of audit and date ordered by commissioner or any officer authorized by him. Date of यहाँ पर ये date of commencement of audit is later of following. अच्छा यहाँ पे 3 months होता है plus 6 months extended if commissioner by commissioner. ठीक है. Later of following में क्या होता है? First होता है number 1 date on which records and documents made available by registered person to tax authorities or actual institution of audit at a place of business. अब यहाँ पर इन गिवन केस देख लेते हैं. प्रोविजन हो गया. अब इन गिवन केस books made date of commencement is later of books made available on 30th December 2024 or actual institution of audit on 20th December 2024. Does commencement date is 30 December 2024 or period of 3 months expire on January, February, March. On 1st March 2024, however, audit was from 30th December 24 was completed within this limit on 25th of March को हमारा कंप्लीट हो चुका है ये ऑलरेडी. ठीक है. तो
ये कंप्लीट हो गया. Hence the views of accountant are not correct as there is number one, no time lapse in completion audit of any financial year can be conducted at a time. ओके, अब ये चेक कर लेती हूँ क्या लिखा है आंसर में. सेक्शन 65 कमिश्नर और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम ऑडिट कर सकते हैं विद इन 3 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, or where commissioner is satisfied for the reasons to be recorded in writing. Okay, for the reasons to be recorded in writing extend further period by 6 months. And commencement of audit means date on which records and other documents are made available to the tax authorities by a registered person or actual institution of audit at place of audit, whichever is later. दोनों में से जो लेटर होगा वो. गिवन केस में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट है, यहाँ पर डेट ऑफ ऑन विच रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल 30th December. मैंने भी लिखा है डेट ऑन विच बुक्स मेड अवेलेबल, और यहाँ पर डेट ऑफ एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट इज 20th December. Therefore डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट इज 30th December, इज 30th March. इन्होंने 30th से लेकर पूरा 30th किया, मैंने 31st March लिखा है तो इसको 30 March करना होगा. 31st March नहीं, ठीक है ना, जो डेट है वहाँ से वहाँ तक का. ओके, 3 months ऐसा. Does in given case audit was completed by tax authorities, sorry now, however audit was completed in given case audit was completed within 3 months, the view of accountant is not correct. The view of accountant is not correct. Further, the period of audit to be conducted under the said section shall be a financial year or part thereof or multiples thereof. View of the accountant audit cannot be conducted is also not correct. Audit of any financial year or the period of audit to be conducted, the period for which audit to be conducted shall be financial year or part thereof or multiples thereof. Okay, so ये वाला chapters complete हो गया. Period for which audit is to be conducted shall be financial year or part thereof or multiples thereof. ठीक है, to be conducted under said section, be conducted under section 65. ठीक है. Now chapter number 17, inspection, search, seizure and arrest. इसके we have 12 questions. अब चैप्टर 16 ने इतना ज़्यादा टाइम ले लिया है, अब मैं 10 minutes के ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करती हूँ.